Assalamu alaikum, dear students. Welcome back. We are talking about the topic educational psychology. इसके कंसेप्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. मीनिंग एंड की कॉम्पोनेंट्स हम डिस्कस करेंगे. हम 11th स्टार्ट की लेवल के हिसाब से, क्योंकि मुझे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लेवल के हिसाब से मैंने इसको प्रिपेयर किया है, और लेवल के हिसाब से प्रिपेयर भी करना चाहिए हर एक टीचर को. पहले अपने स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट लेवल को देखना, उसी के हिसाब से जो लेसन प्लान है वो प्रिपेयर करना चाहिए हर एक टीचर को भी. तो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन साइकोलॉजी प्रमोट करती है. एजुकेशन साइकोलॉजी क्या? टीचिंग एंड लर्निंग. एजुकेशन साइकोलॉजी की वजह से प्रमोट हो जाए टीचिंग एंड लर्निंग. डियर स्टूडेंट, क्योंकि psychologists working in the field of education study how people to learn and retain knowledge. They apply psychological science to improve the learning process and promote educational success for all students. Dear students, educational psychology is a compound word which consists of two words, education and psychology. Education and psychology. My dear students, etymologically, this word education has been derived from different Latin words like educare, educere, educatum, educo. लेकिन हम दो words इसमें explain करेंगे. Educare, which means to bring up, to nourish. यानी कि the child has to bring up like a plant in the garden by the teacher. His potentialities should be developed with proper care and nourishment. को child किसकी मान होता है? Just like plant होता है. किसके? इसका जो गार्डन होता है वो टीचर होता है. ये टीचर के गार्डन में होता है. और अब टीचर को सोचना है कि जो मेरे चाइल्ड की पोटेंशियलिटीज है, जो उसके पास पोटेंशियल है, वो मुझे डेवलप करना है. इसके लिए उसको प्रॉपर केयर प्रोवाइड करना है चाइल्ड को, और नरिशमेंट, प्रॉपर केयर, प्रॉपर नरिशमेंट प्रोवाइड करना है चाइल्ड को. उसके बाद हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स एजुसियर की. Which means to let out, to draw out. क्योंकि हर एक चाइल्ड के पास innate, inborn tendencies होती है, innate powers होते हैं. It should be located and proper education to be developed. इनको locate करना है, फिर टीचर को proper education provide करनी है. Dear students, psychology, dear students, psychology यानी कि education means, here we can say education means modification of behavior, and psychology means the science of behavior. The science of behavior. Dear students, बात हम करेंगे. Psychology was first defined as the science of soul. According to earlier psychologists, the function of psychology was to study the nature, origin, and state is something metaphysical. It can be seen, it cannot be seen, observed, and touched, and we cannot make scientific experiments on soul.
ये भी रिजेक्ट हुआ। पहले साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा था कि जो साइकोलॉजी जो है साइंस ऑफ सोल है, क्योंकि सोल हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, ये व्यू भी रिजेक्ट हुई। उसके बाद क्या हुई, 18th सेंचुरी की बात है। 18th सेंचुरी में क्या कहते, साइकोलॉजी वाज अंडरस्टूड एज द साइंस ऑफ माइंड। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स डिफाइंड psychology as the science of consciousness. James Sully, 1884, science of the inner world, he says, psychology. Thus, psychology first lost its soul, then its mind, and then its consciousness. At present, only its behavior exists, dear students. Like at present, only its behavior exists. According to William M.C. Dogle, 1905, psychology as the science of behavior. Psychology as the science of behavior. Here we can say this education psychology means the study of the behavior of the child, or bringing about modifications or changes in his behavior. देखिए साइकोलॉजी एक ऐसा साइंस है माय डियर स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से हम ह्यूमन का बिहेवियर जो है वो स्टडी करेंगे। अगर हम बात करेंगे सिग्नर की, अकॉर्डिंग टू सिग्नर, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। अगर हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, पील की बात करेंगे या वॉटसन की बात करेंगे, वॉटसन कहता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। In the light of above definitions, we can conclude, dear students, educational psychology deals with the learners, the child, or the individual in relation to educational environment or situation, dear students. तो अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर of students during teaching learning process. In educational psychology, the teachers look for any unusual or disturbed state of mind in students. देखो एजुकेशन साइकोलॉजी जो है, इसकी वजह से हम ह्यूमन जो स्टूडेंट्स हैं उनका बिहेवियर स्टडी करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। और एजुकेशन साइकोलॉजी टीचर को हेल्प करता है कि कैसे, कि जिसकी वजह से उसको पता चलता है कि मेरे जो ये स्टूडेंट्स हैं क्या ये इमोशनली डिस्टर्ब है, क्या इनका माइंड डिस्टर्ब्ड है, मेरे स्टूडेंट्स क्या लर्न प्रॉपर्ली कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, मेरे स्टूडेंट्स के अंदर कौन कौन से ट्रेट्स डेवलप है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स डेवलप है कि नहीं है, सो एज टू प्रोवाइड रेमेडी टू देम। अगर उसको पता लगा कि मेरी जो स्टूडेंट्स है डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड इन स्टूडेंट्स, सो एज टू प्रोवाइड रेमेडी टू देम। अगर हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक साइकोलॉजिस्ट है क्रो एंड क्रू, वो कहता है educational psychology describes and explains the learning experiences of an individual from birth through old age. अगर हम एक और साइकोलॉजिस्ट की बात करेंगे, पील कह रहा है कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है इट इज द साइंस ऑफ एजुकेशन डियर स्टूडेंट्स। अब हम की पॉइंट्स की बात करेंगे, की कंपोनेंट्स की बात करेंगे। जो एजुकेशन साइकोलॉजी इज ए की कंपोनेंट्स इन द टीचिंग लर्निंग process. It is the important from various perspectives such as, तो जो की कंपोनेंट्स हैं, की कंपोनेंट जो है एजुकेशन साइकोलॉजी के टीचर्स, फर्स्ट to now student यानी कि it enables
a teacher to know his learner and identify his her potentialities, capabilities, strength and weakness. पहले क्लासरूम में टीचर को स्टूडेंट को जानना है, अपने लर्नर को जानना है, सिखाने वाले को जानना है टीचर को. थ्रू एजुकेशनल साइकोलॉजी इसमें आपको हेल्प करती है टीचर को कि वो अपने स्टूडेंट को जानने की कोशिश करता है कि क्या जानना है, जो उसके पास पोटेंशियलिटीज है किस किस्म की है, कैपेबिलिटीज या इसका एटीट्यूड या इसके इंटरेस्ट या इसकी कैपेबिलिटी या इसकी स्ट्रेंथ या इसकी वीकनेस क्या है. वन थ्रू एजुकेशन साइकोलॉजी के जरिए स्टडी करते हैं. पॉइंट नंबर 2, needed for selecting and needed for selecting and organizing the subject matter. Organizing subject matter. Subject matter, dear students. Overall learning experience. Yamanus learning experience. Learning experience. Here we can say, dear students, when a teacher knows his students, it became easy for him to select and organize learning experiences and also select or develops learning materials in our classroom, dear students. कौन से किन चीज़ों को मुझे सिलेक्ट करना है, जिसकी किन लर्निंग एक्सपीरियंस को मुझे सिलेक्ट करना है क्लासरूम में, जिसकी वजह से मेरी स्टूडेंट्स लर्न करेंगे प्रॉपरली और मेरी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव बनेगी, अट्रैक्टिव बनेगी. और कौन कौन सा मटेरियल मुझे यूज़ करना है क्लासरूम में, डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट को हेल्प करते हैं. नेक्स्ट वन हियर करेंगे हम बात, डियर स्टूडेंट. It suggests the tools. It suggests the tools and techniques of teaching and learning. Educational psychology suggests different tools and techniques which they use to make his classroom more attractive so that he can involve students in the teaching learning process. क्योंकि students को involve करना है teaching learning process के अंदर और उनको motivate करना है. क्योंकि educational psychology आपको it suggests the tools and techniques of teaching and learning. टीचिंग जो कौन से टूल्स आप यूज करोगे, कौन से टेक्निक्स आप यूज करोगे जिसकी वजह से आपकी क्लासरूम्स अट्रैक्टिव बनेंगे. क्योंकि ये चीजें सजेस्ट करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी कि हर एक लर्न करेगा, प्रॉपर लर्न करेगा. डियर नेक्स्ट वन पॉइंट इज, डियर स्टूडेंट्स, रिगार्डिंग गाइडेंस सर्विसेज. And during guidance services, it's very important, dear students, because the knowledge of educational psychology helps the teacher in ensuring guidance services to the students. He can better diagnose his students, their abilities, interests and aptitudes of his pupils. क्योंकि टीचर को पता है मेरे स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट क्या है, एबिलिटीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, एप्टीट्यूड्स क्या है.
वो डायग्नोज कर सकता है मेरे स्टूडेंट्स क्या बन सकेंगे, उनमें कौन कौन से क्वालिटीज है, किस किस्म के कौन कौन से एस्पेक्ट्स डेवलप है। ठीक, यहाँ पे आपको एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सॉल्विंग क्लासरूम प्रॉब्लम्स। Solving classroom problem, dear students. There are innumerable problems like backwardness, bullying, cheating situations which a teacher has to face in the classroom. Different problems. Bullying आप देखते हो classroom में, cheating देखते हो, backwardness देखते हो, डिलिकेंट्स प्रॉब्लमेटिक चैप्टर्स देखते हो क्लासरूम में, उनको कैसे हैंडल करना, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना, एजुकेशन साइकोलॉजी आपको बता रही है। एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर इन दिस फील्ड आल्सो, डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, नोइंग अबाउट हिमसेल्फ। नोइंग अबाउट हिमसेल्फ। Knowing about himself, dear students. क्योंकि knowledge of education psychology helps the teacher to know himself. As a result, we can know about his own behavior pattern, personality characteristics, likes and dislikes, motivation and conflicts and adjustment, etc., dear students. In short, we can say, dear students, educational psychology helps the teachers in understanding the educational problems and situations, and thereby solving them in an effective manner. It is of great importance to parents, teachers, guidance workers, काउंसलर्स एंड कैरियर मास्टर्स, डियर स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, डियर स्टूडेंट्स, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो हम कल उठाएंगे। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। हाय।